Hello learners. Today we are going to discuss on the topic marriage in India. After completion of this session, we are able to understand the concept of marriage, views of marriage and forms of marriage. The popular concept of marriage that it is a union between man and woman. Another concept of about marriage is that it is a social union, social sanction of union, and it's accomplished by different rituals and ceremonies. Yet another view about marriage is that it is a system of roles involving primary relationships. The Hindu concept about marriage is that it is a sanskar or dharma. Before studying the traditional and modern system of Hindu marriage, it is important to know the sociological significance of marriage. Generally, we know we have heard about the marriage ceremonies, rituals, post-marriage ceremonies. Here we need to understand the concept, views and forms of marriage. Marriage is one of the deepest and most complex human relationships. It is the cornerstone of society, it is the basis of society. Dr. Radhakrishnan, former President of India, observes marriage as not mere convention but an implicit condition of human society. It is an institution devised for the expression and development of love. Its purpose is not only the generation and nurturing of children, but also enrichment of the personality of husband and wife through the fulfillment of their need for a permanent companionship. So here we discuss the concept of marriage. Every individual has to play a number of roles in his or her individual life. Two important roles have very great significance in an individual life. One is the economic economic role, and second one is the familial or marital role. So here we discuss the concept of marriage. Now I request my colleague Dr. Seema Rani how the marital role play important role in individual life. So what is the concept of marriage? नमस्कार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज का हमारा जो चर्चा का विषय है भारत में विवाह। सबसे पहले मैं आप सबको ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि विवाह जो आज का हमारा विषय है, ये समाज कार्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ना क्यों ज़रूरी है। आप सबने सुना होगा जब शादियाँ होती हैं तो दो परिवार ही नहीं, दो समुदाय, दो समाज एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ वो अभिव्यक्ति ज्ञापित करते हैं। विवाह एक ऐसी संस्था है, विवाह एक ऐसी लघु व्यवस्था है समाज की, जिसमें दो परिवार ही नहीं बल्कि दो समुदाय, दो समाज का मिलन होता है। और इसको सामाजिक पाठ्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में पढ़ने का हमारा आज का मुख्य उद्देश्य यह है कि जब तक हम समाज में सामाजिक बुराइयों की जब हम बात करते हैं, समाज कार्य पाठ्यक्रम की बात करते हैं, समाज कार्य का विभिन्न संस्थाओं के साथ कार्य की बात करते हैं, तो जब तक हम समाज की विभिन्न जो व्यवस्थाएं हैं उनको नहीं समझेंगे तो हम समाज में जो समाज की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने में सक्षम नहीं होते हैं।
तो जो विवाह है वो भी समाज की एक बहुत ही लघु व्यवस्था है। जब हम पारिवारिक समस्याओं की बात करते हैं, व्यक्तिगत समस्याओं की बात करते हैं, वैवाहिक समस्याओं की बात करते हैं, और जब उसमें सामाजिक कार्यकर्ता के भूमिका की बात करते हैं कि अगर कोई पारिवारिक समस्या है, वैवाहिक समस्या है, पति पत्नी के बीच कोई समस्या है, या फिर परिवार में महिलाओं से संबंधित कोई समस्या है, तब उसके संविधान की बात करते हैं तो हम परिवार की, समाज की इन सभी लघु इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जिसमें परिवार और परिवार में विवाह और उसमें जो परिवार में विभिन्न दायित्व निर्वाह कर रहे हैं, जैसे पत्नी, बेटा, माता पिता, उनका क्या योगदान है, उन सभी लघु इकाइयों का सूक्ष्म रूप से जानकारी लेना अत्यंत आवश्यक है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा विषय है भारत में विवाह। जब तक हम विवाह को नहीं समझेंगे तो हम वैवाहिक समस्याओं को समाज कार्यकर्ता के रूप में हल कर पाने में सक्षम नहीं होंगे। तो विवाह, जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया, विवाह एक ऐसी लोकप्रिय अवधारणा है जिसमें माना जाता है कि यह एक औरत और पुरुष का मिलन है, जिसमें वो अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करते हुए एक परिवार को आगे बढ़ाते हैं और जिसको सामाजिक वैधता हासिल होती है। वैवाहिक संकल्पना अगर हिंदू परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक व्यक्ति का एक धर्म है कि अगर व्यक्ति का धार्मिक दायित्व बनता है कि वो विवाह करे और आगे जाके अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करे। तो संकल्पना के आधार पर अगर हम विवाह को समझते हैं तो यह एक ऐसी अवधारणा है, एक सामाजिकरण की एक व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति को अपने विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करना आवश्यक होता है। मैं चाहूँगी कि मेरे सहयोगी लिंगा स्वामी पे प्रकाश डाले कि विभिन्न दृष्टिकोणों से, विवाह के विभिन्न दृष्टिकोणों से हमारा क्या अभिप्राय है। Now, in this context, we need to discuss the important point: primary relationships and secondary relationships. In order to understand this more clearly, you have to see the difference between primary relationship and secondary relationship. Primary relations are essentially unlimited, particularistic, emotionally involved, altruistic, and spontaneous. For example, we will observe the emotional bond between mother and children, emotional bond with father and children, grandparents with granddaughters and grandchildren. So here primary relations are emotional and unlimited. There is no end. And it's spontaneous. It's naturally it comes out. But the secondary relationships are contractual, standardized, unemotional, utilitarian. For example, an individual working with one company, when the individual working with the company interact with the fellow colleagues and company owner or the remaining hierarchy structured people. Once the individual left the company, his relationship with company is closed. So these secondary relationships are contractual, limited, and unemotional. There is no emotional bond between fellow colleagues within the same company. Why we are discussing these relationship in this context? We will discuss primary relationship in marriage is different from primary relationship in other primary groups like friendship, neighborhood, village, etc. We cannot comparison family with other primary institutions like primary groups like friendship,
neighborhood, and village. It is in the sense that primary relationship in marriage is based on sexual relationship, and this sexual relationship brings further intimacy and permanence in the relationship between a man and woman. Primary relation in marriage has two important functions. One is need gratification and second one social control. It gratifies biological needs, it gratifies social needs, it gratifies emotional needs, it gratifies economic needs of the individuals, and also acts as a primary source of morality and ethics. Why the primary relations is important here? Moral ethics and values, morality and ethics improved by the primary relationships. When one finds one's partner performing certain tasks for him, his responsibility to take care about her partner. One is thus no longer free to immoral and irresponsible. Another sociological way of conceptualizing family is how marriage involves performing new and varied roles such as husband, wife, father, mother, son, daughter, brother, sister, and so on. Once marriage involves performing different and varied roles played by individual, either wife or husband, play like father, mother, son, daughter, brother, sisters, and so on. What is important in marriage is how the role enactment of one partner corresponds to the role expectations of the other partner. So here, marriage plays vital role in performing the roles of individual. So now I am inviting my colleague Seema Rani continue on these roles and what is the balance between wife and husband. How equilibrium is important between wife and husband. If there is no equilibrium, what is the consequences in the marriage? हाँ, जैसे कि हमने विवाह की संकल्पना के बारे में अभी बात की और विभिन्न धर्मों में विवाह से हमारा क्या अभिप्राय है उसके बारे में भी अभी हमारी चर्चा हुई। जैसे कि विवाह को एक बहुत ही धार्मिक संस्कार हिंदू संस्कारों में माना गया है और इस्लाम धर्म में भी जो विवाह होता है उसको एक व्यक्ति के जो समाज के अनुरूप जो व्यवहार होता है उसको करने के लिए प्रेरित करने वाली एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर व्यक्ति वैवाहिक संबंधों में है तो वो एक सामाजिक उसको उसमें सामाजिक नियंत्रण है और वो समाज के अनुरूप व्यवहार करेगा और समाज के विपरीत कोई व्यवहार करने में वो अपने आप को रोक सकेगा। तो ये विभिन्न धर्मों में विवाह की संकल्पना से हमारा अभिप्राय है। और हमने और एक बात का जिक्र किया कि जो रिलेशन होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी रिलेशन की जहाँ पे बात की, प्राथमिक और दैत्विक रिलेशन। प्राइमरी जो प्राथमिक जो संबंध होते हैं, जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया कि वो स्वार्थ रहित होते हैं, असीमित होते हैं, उनमें उसमें कोई स्वार्थ नहीं रहता है। और वैवाहिक जो संबंध होता है वो प्राथमिक संबंधों पर ही आधारित होता है, जिसमें जो वैवाहिक संबंध में जो पति पत्नी होते हैं बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी सीमित क्षमताओं के वो अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। वहीं अगर दैत्विक भूमिकाओं की बात करें तो वो समहाउ स्वार्थ पर आधारित होते हैं। जैसे हम आर्थिक रूप से जब हमें अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करना होता है तो वहाँ पे हमारा स्वार्थ होता है, हम किसी क्षेत्र में कार्य करते हैं और आर्थिक रूप से अपने आप को सक्षम बनाते हैं और जो परिवार की आर्थिक ज़रूरतों का निर्वाह करते हैं।
ये हमारे हुए प्राथमिक और जो दैतिक दायित्व, और उसमें वैवाहिक जो संबंध होते हैं वो प्राथमिक संबंधों पर आधारित होते हैं। और जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि जब परिवार में आप विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह करते हुए पति पत्नी होते हैं, माता पिता भाई बहन बुजुर्ग, वे अपनी विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हैं, और इस परिवार में सबका एक दूसरे के साथ समायोजन होना आवश्यक है, तभी एक परिवार का निर्माण होता है। जैसे कि समाजशास्त्री भी कहते हैं कि वैवाहिक जीवन से आप दूसरा एक पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं। ये पारिवारिक संकल्पना को भी निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम पारिवारिक संकल्पना को भी एक विवाह की प्रक्रिया के द्वारा समझ सकते हैं। तो परिवार में आप अपनी भूमिकाओं का कैसे निर्वाह कर रहे हो, पति पत्नी आपस में कैसे अपनी भूमिकाओं को बांटते हैं। जैसे पति का कार्य होता है कि जो परिवार है उसकी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करना, और पत्नी का कार्य होता है घर के जो विभिन्न काम हैं उनमें हाथ बटाना, खाना बनाना, रोटी बनाना, घर के काम करना इत्यादि। तो किस तरीके से अपनी जो ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतों को पूरा करते हैं और एक दूसरे के साथ समायोजन स्थापित करते हैं, संतुलन स्थापित करते हैं और बैलेंस का वो काम करते हैं। जब जब यही जो एक प्रक्रिया है, एक जो व्यवस्था है, इसमें जब संतुलन नहीं होता है, आपस में वैचारिक मतभेद हो जाते हैं और मनमुटाव होते हैं, संतुलन नहीं बना पाते हैं, एक समायोजन जो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम की बात की हमने, जब वो नहीं होता है तो यहीं से हमारे जो मैरिटल डिस्प्यूट होते हैं, वैवाहिक जो परेशानियां होती है वो उत्पन्न होती है, उसी को हम कहते हैं वैवाहिक परेशानियां या वैवाहिक जो समस्याएं होती हैं। तो यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो परिवार है उसमें हर पति पत्नी कैसे काम कर रहे हैं, कैसे अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। हम सब ने विभिन्न संस्थाओं के अंतर्गत जब हम मैरिटल या परामर्श या फिर जिसे हम वैवाहिक परामर्श कहते हैं उसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा जब हम स्थिति को जानने लगते हैं तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि आपकी शादी कैसे हुई है, आपने समाज के रीति रिवाज के अनुसार शादी की है, अपने माता पिता के अनुसार शादी की। सारे जो विभिन्न तथ्य हैं इनको हम जानने के इच्छुक होते हैं, तक क्योंकि वहीं से हमारी जो समस्याओं का समाधान होता है उसके एक प्रारूप रेखा बनाने में हमें मदद करती है कि हमें इसकी कैसे सहायता करनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम जानते हैं कि आपके बीच कैसा संतुलन है, क्या आपके वैचारिक मतभेद क्या है, विभिन्न समस्या को हम इस तरीके से जानते हैं। तो जो संतुलन में जब पारिवारिक असंतुलन होता है, वैचारिक मतभेद होते हैं, आपसी मनमुटाव होता है, यहीं से हमारा वैवाहिक मतभेद शुरू होते हैं। So here we can say who performs which role is important, not important or irrelevant. Here only the important is who should perform these roles for the stability of marriage is very important. Either wife or husband. Yes. Perform these roles for their stability of marriage. Next we will continue on views of marriage. Various views have been expressed on this institution by anthropologists, sociologists, and including religious texts. Marriage is an institution in which men and women are admitted to family to live in the close personal relationship, primarily for a purpose of begetting and rearing children. From the social point of view, marriage is an institution that serves to ensure propagation and socialization of children of a particular society. We can say here, social point of view, the marriage is an institution, ensure the individual propagation and socialization of children of a particular society. From the individual point of view, it provides assistance, bearing and raising of children, and controls over the receipt and extension of affection. Another view is that
Marriage is socially legitimate sexual union began with a public announcement and undertaken with some idea of contract which spells out reciprocal rights and obligations between spouse and their future children. Indian views on marriage. So far we discuss represent Western thinking about marriage. According to Indian experts, marriage has been considered a ceremonial gift of the bride by her parents, relatives to the bridegroom, in order to that both may together fulfill their duties which are necessary for human existence. These duties are dharma artha and kama moksha. We know dharma. Dharma is religious duty based on ethical values. That is to do good and attain moksha or salvation. Artha is the economic aspect of life and kama is the physical duties to partner and to produce children to perpetuate race. So here we can say individual point of view, social point of view, and sociological and anthropological point of view. Finally, we discussed Indian point of view. Indian point of view, we can say the duties of the individuals marry, then after that their duties dharma artha kama moksha. Marriage is not for sense of enjoyment but do perpetuate the race. This is the Indian conception of marriage. The Hindu concept of marriage is that it is a sanskar or dharma and a religious sacrament, not a contract. It is a holy union of the two souls and not simple of two bodies. It is an unbreakable bond which could be broken only by death. Here we can say surely it is holy union of two souls, not two bodies, and not only two individuals, two families, two family groups. So this is a Hindu concept of marriage. On the other hand, Islam and Christian views of marriage we discuss. Now I am asking my colleague views of Islam and Christian marriage. जैसे कि पहले भी बताया मैंने कि जो इस्लाम धर्म है उसमें भी विवाह को एक बहुत ही माननीय एक भूमिका प्राप्त है, जिसमें इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि अगर व्यक्ति विवाह के संबंध में है तो वो समाज में जो अस्वीकार्य जो व्यवहार है उससे अपने आप को बचा पाता है तथा एक अपने परिवार का दायित्व निर्वाह करने के लिए वो सक्षम हो जाता है और समाज में एक नियंत्रण का कार्य स्थापित करता है। इसी तरीके से ईसाई धर्म में भी विवाह का अपना एक महत्व है। ईसाई धर्म के अनुसार अगर विवाह में आप बनते हैं तो एक दूसरे के आप पूरक हो जाते हैं। आप एक दूसरे के लिए न केवल अपने जो वैवाहिक दायित्व है उनका निर्वाह करते हैं बल्कि आप समाज में समाजीकरण की व्यवस्था को भी स्थापित करते हैं। एक शिष्टाचार जिसे हम कहते हैं वो व्यक्ति में आता है। व्यक्ति में एक जो परिपक्व उससे होता है और अपने दायित्व का पूर्णतः निर्वाह करने के लिए वो पूर्णतः तैयार हो जाता है। तो ये विभिन्न धर्मों में विवाह की ऐसी मान्यता है। दूसरा जो हमने अभी चर्चा किया कि हिंदू धर्म में विवाह को केवल एक रीति रिवाज तक ही सीमित नहीं किया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार विवाह को एक संस्कार माना गया है।
जो कि एक व्यक्ति का धार्मिक कर्तव्य है, और जो विभिन्न हिंदू धर्म के अनुसार इसमें एक रीति रिवाज होते हैं। ये विवाह सिर्फ एक पति पत्नी का यौन संबंधों पर आधारित संबंध ना होकर एक आत्माओं का मिलन होता है, जो कि इस जन्म तक सीमित ना होके आगे तक चलने वाला एक संबंध होता है। तो इसको बहुत ही पवित्र स्थान दिया गया है। जहाँ हम हिंदू वैवाहिक संकल्पना की बात करते हैं तो इसको एक बहुत ही पवित्र माना गया है कि आप अगर वैवाहिक संबंधों में हैं तो आप एक पवित्र संबंध में हैं, आप समाज में एक वैधता हासिल करते हैं, आपको सामाजिक एक स्वीकृति हासिल होती है कि आप आगे का जीवन अपना सुचारू रूप से चलाएं और एक दूसरे के प्रति अपना दायित्व निर्वाह करें। हम देखते हैं कि पति पत्नी को एक दूसरे का पूरक हम कहते हैं, वो इसी तरीके से कहते हैं कि एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे के साथ संतुलन बनाते हुए, समायोजन करते हुए अपने आने वाले दायित्व को कैसे निर्वाह करना है, आगे जैसे बच्चे पैदा करना है, विभिन्न भूमिकाओं को निभाना है, उनका निर्वाह करना है, उनको पढ़ाना है, उनको आगे बढ़ाना है, ये सारे दायित्व हम कैसे निभाएं, इन्हीं सब भूमिकाओं का एक स्वीकृति आगे जाने के लिए जो इसे एक धर्म के रूप में हम मानते हैं। तो now I would request Linga Swami to clear about the different forms of marriage. There have been different opinions regarding the forms of marriage. Some theorists say that primary man lived in a state of group marriage. Some social scientists who believed that monogamy was its original form. But polygamy, polyandry, levirate and sororate forms are also found. Monogamy is the only form of marriage found in most societies and acceptable form of marriage. A man marries only one woman, raises children with the wedlock and performs all rites with his mate. Here, man marries only one woman and all rituals with his mate only. After wedlock, generally the monogamy of marriage, long history of its own. Ancient Hindus regarded monogamy as the most ideal form of marriage. Polygamy is marriage of one male with more than one female. A polygamous marriage may be understood unrestricted or restricted or conditional. In early Hindu society, conditional polygamous marriage was practiced. Today, polygamy has been legally prohibited. We know polygamous marriage legally prohibited, and after that there is a different reasons. No one is practicing these different reasons behind this polygamy. Polyandry is a marriage in which one woman marries more than one man. This was found among the few communities in southern part of India. There are two types of polyandry which are prevalent or which are common in India. They are fraternal and non-fraternal. Here fraternal means the husbands are all brothers or possibly from cousins from the father's side, like cousin brothers. In the non-fraternal, they are not related each other. Levirate type of marriage. Levirate is a form of marriage under which a woman taken as the wife of the late husband younger brother. The form of marriage exists among few castes in India. Last one, sororate. In sororate, wives of a man are invariably the sisters. In this form of marriage, several sisters are simultaneously or potentially the spouses of the same woman, the same man. It has been observed that the death of the wife or being barren is
compensated by supplying a new spouse who is generally the younger sister or the decent woman. So now after this session, we able to understand the concept of marriage and forms of marriage and views of marriage. But nowadays, all these forms, concept and views of marriage changed because of liberalization, globalization, modernization, urbanization. Different factors are influencing the forms of marriage and concept of marriage and views of marriage. There is a different reasons on this marriage and marriage in India. So thank you. नमस्कार. Namaskar. Do you know that the world's population has reached 8 billion on 15th November 2022? And we are still counting. I don't know where do we go from here. The predictions are scary. Any idea how many people can Mother Earth sustain? India's growing population is a serious concern, and we are soon going to become the world's most populous country. Wow, number one. Population is, after all, a human issue. The UN proposed Sustainable Development Goals cannot be achieved unless and until we consider the population dynamics. So, here we are. Indira Gandhi National Open University offers appreciation course on population and sustainable development. The course explores the linkages between population and sustainable development. In this course, there are diverse issues related to population, environmental safety, livelihoods, human health, migration, urbanization, and much more. The course duration is 3 months, but of course, you can complete it within a year. The eligibility of the course is graduation from a recognized university. So, if you are a development professional, working in a government sector, researcher, or keen to know more about the population and sustainable development, the course is must for you. Hurry up and join this course so that we are able to convert population into demographic dividend and not convert it into demographic disaster. For more information, visit www.ignou.ac.in. Thank you. पहाड़ों पर जाना किसे पसंद नहीं? इस तरह के पहाड़ तो आपने देखे ही होंगे। चलिए, आज आपको विशेष प्रकार के पहाड़ों की सैर कराते हैं। ये हैं कूड़े के पहाड़, जिनके बोझ तले दुनिया दबी जा रही है। इन कूड़े के पहाड़ों में हैं हमारे घरों, कार्यालयों, उद्योगों से निकलने वाली बेकार की वस्तुएं, जैसे इस्तेमाल किया हुआ कागज़, फटे कपड़े, पुरानी लकड़ी, धातु, कांच के सामान, सब्जी फलों के छिलके, पुराने मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि। कूड़े के ये पहाड़ न केवल शहरों में बल्कि गांव में भी पाए जाते हैं। अपशिष्ट की बढ़ती हुई मात्रा और इसकी विषैली प्रकृति हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। कभी सोचा है इसका निपटान कैसे होता है, या क्या होता है इन कूड़े के पहाड़ों का? कैसे हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपशिष्ट प्रबंधन में प्रमाण पत्र कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। यदि आप नगर निगम में कार्यरत हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, अपशिष्ट प्रबंधक हैं या अपशिष्ट से जुड़ी हुई परामर्श सेवाएं, अनुसंधान
सामीन, मैं डॉक्टर अहमद अली जौहर, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली। आज आपकी खिदमत में पेश है उर्दू के मशहूर शायर पंडित बिरज नारायण चकबस्त की नज़्म निगारी और उनकी एक नज़्म का तज्जिया, एनालिसिस। सामीन, पंडित बिरज नारायण चकबस्त एक आला समाजी हैसियत के हामिल कश्मीरी बरहमन ख़ानदान के फ़र्द थे। उनकी विलादत 19 जनवरी 1882 को फैज़ाबाद में हुई। 5 साल की उम्र में उनके वालिद इंतकाल कर गए। इसके बाद उनकी देखभाल, उनकी किफ़ालत उनके मामू ने की। पंडित बिरज नारायण चकबस्त ने 1900 में मैट्रिकुलेशन, 1902 में FA, 1905 में BA और 1907 में वकालत का इम्तिहान पास किया। खुदादाद सलाहियत, इल्मी लियाकत, पेशावराना महारत की बुनियाद पर बहुत जल्द पंडित बिरज नारायण चकबस्त का शुमार सफ़े अव्वल के वकला में होने लगा। चकबस्त का इंतकाल 12 फरवरी 1926 को हुआ। सामीन, उन्होंने बहुत कम उम्र पाई, लेकिन इस मुख्तसर जिंदगी में भी उन्होंने उर्दू शेर व अदब की बहुत ही अहम खिदमत अंजाम दी। जैसा कि आपको मालूम है कि पंडित बिरज नारायण चकबस्त को शायरी विरासत में मिली थी। उनके वालिद भी शायर थे। वो बचपन से ही शेर व शायरी और आला अदबी महफिलों में बैठते थे। इस ज़ौक़ व शौक़ ने और इस सोहबत ने उनकी अदबी शख्सियत को परवान चढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। उन्होंने जो पुराने शुअरा थे, असातिज़ा के कलाम का बगौर मुताला किया। उनके कलाम पर मीर अनीस और उनकी गज़लों पर ख्वाजा हैदर अली आतिश के कलाम के असर की निशानदेही अक्सर नाक़िदीन ने की है। शेर व अदब के तईं चकबस्त का जो नज़रिया था वो बहुत वसी था। वो शेर व अदब के ज़रिए समाज की इस्लाह और मुल्क व कौम की तरक्की का सामान फराहम करना चाहते थे। यही वजह है कि उनका कलाम फ़लसफ़ियाना और अदक मज़ामीन से पाक है। पंडित बिरज नारायण चकबस्त ने आतिश, गालिब और मीर अनीस से गहरा असर ज़रूर कबूल किया, लेकिन शायरी में उन्होंने अपना लहजा वज़ा किया और अपने मुनफरिद रंग को बरकरार रखा। चकबस्त की नज़मिया शायरी को समझने के लिए उनके अहद पर भी नज़र डालना ज़रूरी है। चकबस्त के अहद का हिंदुस्तान
सियासी व समाजी इंतशार और खलफशार की जद में था। उनकी शायरी में, उनकी नज़मों में उनके अहद की सियासी व तहजीबी कशमकश, समाजी अबतरी, अहले वतन के दर्द का एहसास और कौम के तई फिक्रमंदी, ये तमाम चीज़ें जलवागर नजर आती। चकबस्त ने अपने मकासद की तकमील के लिए कौमी और सियासी तहरीकों और सानिहात से मुताल्लिक इम्प्रेसिव यानी पुरअसर नज़में लिखी। उनके कलाम में हुस्न व इश्क के रिवायती मज़ामीन के बजाय कौमी और वतनी बेदारी का मौजू गालिब है। चकबस्त की ख्वाहिश थी कि अहले वतन मगरिब की अंधी और कोराना तकलीद का रवैया तर्क करें और मशरकी अक़दार और रिवायात, मशरकी परंपरा में इस्लाह करके मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली का सामान फराहम करें। चकबस्त अपनी नज़मों में जब मुल्क व कौम की मोहब्बत में नासिहाना पैराए बयान इख्तियार करते हैं तो उनकी नज़मों में बेअसरी के बजाय एक मुखलिस और दर्दमंद मुहिब्बे वतन की सरमस्ती और वारुफ्तगी की कैफियत पैदा हो जाती है। चकबस्त ने अपनी नज़मों में अक्सर व बेशतर हिंदुस्तानी तशबीहात व इस्तिआरात को बरूए कार लाया है। उनकी जो नज़में कश्मीर से मुताल्लिक हैं उनमें शायर की उस सरजमीन से जो उनका लगाव है, जो वालिहाना शेफ्तगी है, वो देखते ही बनती है। उनके कलाम में ऐसा असर है जो पढ़ने और सुनने वालों को मशहूर कर देता है, अपनी गिरफ्त में ले लेता है। उनके शेरी मसलक की वजाहत उनके इस शेर से बखूबी होती है। कौम का सौदा वफा का शौक खिदमत की उमंग, कौम का सौदा वफा का शौक खिदमत की उमंग, बस इन्हीं दो तीन के सदक़े में दिल आबाद था। यानी दिल में सिर्फ और सिर्फ यही अरमान थी कि कौम से इश्क हो, मुल्क से इश्क हो, वतन से इश्क हो, और यानी कौम की मोहब्बत में सोना, उठना, लेटना, बैठना, जिंदगी बसर करना होता था। बस यही यानी वतन से मोहब्बत उनकी रगों में सिरायत की हुई थी। शेर व अदब के सिलसिले में चकबस्त का नुक्ते नज़र नासिहाना और इस्लाही था। इसलिए उनकी नज़मों में मुल्क व कौम की तरक्की व खुशहाली में मुनहमिक अशख़ास की कदर शनासी भी है और कौमी रहनुमाओं के पैगाम पर अमल करने का पुरजोश वलवला भी। पंडित बिरज नारायण चकबस्त अपने सीने में वतन की मोहब्बत से सरशार दिल रखते थे। उनका जज्बे हुब्बुल वतनी कभी हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद की शक्ल में देखने को मिलता है और कभी अहले वतन पर अंग्रेज हुक्मरानों की आयत करदा जाबिराना पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज की सूरत में नजर आता है। मसलन प्रेस की आज़ादी और आज़ादी गुफ्तार वगैरह, उनका ख्याल था कि ऐसी पाबंदियों को मुनज़्ज़म एहतजाज के ज़रिए दबाव से ख़त्म करके हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद के ज़रिए
हम होम रूल तक पहुंच सकते हैं, जो उस वक्त पेशतर मुहिब्बे वतन हिंदुस्तानियों का ख्वाब था। चकबस्त का जहन पर लखनऊ के मरसिये की रिवायत और मीर अनीस का गहरा असर था। उन्होंने मीर अनीस के मरसियों का बगौर मुताला किया था। मीर अनीस की पैरवी करते हुए मुसद्दस के फार्म में पोशीदा इम्कानात को बरूए कार लाकर अपने बाद मुखलिस दोस्तों और कौमी रहनुमाओं की वफात पर दर्द-अंगेज मरसिया नुमा नज़्में तख्लीक की। लेकिन ऐसी नज़मों को चकबस्त ने खुद मरसिया न कहकर नौहा कहा। चकबस्त का यह शायराना इम्तियाज़ है कि उन्होंने मुसद्दस की हैत में जो शख्सी मरसिये कहे, उन्हें नौहा कहकर उर्दू शायरी में एक अलहदा तर्ज की बुनियाद डाली। मुसद्दस की हैत में कही जाने वाली नज़मों में उनकी एक अहम नज़्म रामायण का एक सीन है, जिसके मुकालमात बेअख्तियार हमारे ज़हन को मुतवज्जा करते हैं। चकबस्त की नज़मों के मुताले से अंदाज़ा होता है कि खाके वतन के ज़र्रे ज़र्रे से उन्हें इश्क था और वो हर हम वतन को नेकी व शराफत के पैकर में ढला हुआ देखने के मुतमन्नी थी। उनकी नज़मों में उनकी इस ख्वाहिश का इजहार बहुत ही खूबसूरत और मुअस्सिर अंदाज में हुआ है। उनकी नज़्म नौजवानों से खिताब इस ज़िम्न में बहुत ही नुमाया है। इस नज़्म का मतन मुलाहिजा हो। हाँ जवानाने वतन ख्वाब से बेदार हो अब, सो चुके रात भी आखिर हुई होशियार हो अब। सहरे नूरे वफा के लिए तैयार हो अब, दर्द दिल कुछ मुझे कहना है खबरदार हो अब। बेखुदी दिल की है तस्वीर बयां मेरी है, मरसिया कौम का है और ज़बां मेरी है। नुक्ताचीनी से गरज है न दिल आज़ारी है, सिर्फ मंजूर नज़र ख्वाब से बेदारी है। गफलत ऐश दिलों पर जो यहाँ तारी है, बेखुदी कहते हैं इसको कि ये होशियारी है। क्या किए जाते हो, क्या मुँह से कहे जाते हो, कुछ खबर है तुम्हें किस समत बहे जाते हो। चमने उम्र हमेशा न रहेगा शादाब, खुम में बाकी न रहेगी ये जवानी की शराब। नशे इल्म में हर वक्त रहो तुम गरकाब, शान तालीम यही है, यही तहजीब शबाब। ले उड़ी दिल को तबीयत की रवानी वो है, बेपिए नशा रहे जिसमें जवानी वो है। मस्त कर देती है ऐसा ये शराब सरे जोश, नजर आती है मैं हुस्न से दुनिया मदहोश। सैर जन्नत में रहा करते हैं चश्मो लबो गोश, मुझसे कहता था जवानी में मेरा बादा फरोश। हर घड़ी आलमे बाला पे नजर रहती है, कहीं इंसान को दुनिया की खबर रहती है। नशे इल्म में तुम में से नहीं कोई भी चूर, दखल रहता है तबीयत में ताल्ली को जरूर।
हो गया है जो ज़रा 4 किताबों पे उबूर, तो गज़ब की हमदानी है क़यामत का गुरूर। शान अरस्तू की भी फ़िरऔन का सामान भी है, वही घर मिस्र भी है और वही यूनान भी है। इल्म व अखलाक के दामन पे तुम्हारे है ये दाग, जो बुजुर्गों ने लगाया था उजड़ता है वो दिमाग। तुमको अल्लाह ने बख्शे हैं वो दिल और वो दिमाग, जिससे रोशन हो ज़माने की तरक्की का चराग। एक ज़रा जज्बे अखलाक को आला कर दो, कौमे मरहूम की तुरबत पे उजाला कर दो। तुम मदद के नहीं मुहताज ये मैंने माना, हो मगर फिक्र से बच्चों की ना यूं बेगाना। बारे एहसास सुबुकदोश हो गर हो दाना, एक दिन कौम के आगे न पड़े शर्माना। तुमको बच्चों का बड़ा फर्ज अदा करना है तो ईमान की ये कर्ज अदा करना है। उन्हें बच्चों की मोहब्बत हुई है दामनगीर, आपकी सम्म खराशी की जो की ये तदबीर। अपने दर्दे दिले नाशाद की है ये तफसीर, अश्के हसरत से क्या है जिसे दिल ने तहरीर। चाहे मजजूब की बढ़ चाहे नसीहत समझो, या हमारे दिले मुर्दा की वसीयत समझो। सामीन, अभी आपने पंडित बृज नारायण चकबस्ती की नज्म नौजवानों से खिताब मुलाहिजा किया। इस नज्म के एक एक लफ्ज, एक एक सेंटेंस, एक एक जुमले, एक एक हर्फ में जो वतन की मोहब्बत, वतन का इश्क छुपा हुआ है, उसे हम सच्चे हिंदुस्तानी ही महसूस कर सकते हैं। शायर ने किस दर्द से यह नज्म तख्लीक की है। जाहिर है हमने गुलामी का वो दौर नहीं देखा जब अंग्रेज हमारे मुल्क पर मुसल्लत थे। हजारों जाने जा रही थी, कुर्बानियां पेश की जा रही थी। पंडित बृज नारायण चकबस्त अपने कलाम के जरिए, अपने अल्फाज के जरिए, अपनी नज़मों के जरिए अहले वतन को मोटिवेट कर रहे थे, उनको हौसला दे रहे थे, इनकरेज कर रहे थे। सामीन, चकबस्त की नज्म नौजवानों से खिताब उनकी समाजी व मुआशरती इस्लाह के सिलसिले में कही जाने वाली नज़मों में एक अहम नज़्म है। चंद बंदों पर मुश्तमिल यह नज़्म मुसद्दस की हैयत में लिखी गई है। इसमें नौजवानों को गफलत से बेदार होने, इल्म हासिल करने, वतन से मोहब्बत करने और अपने मुस्तकबिल को, फ्यूचर को बेहतर बनाकर मुल्क व कौम की खिदमत करने की तलकीन की गई है। जैसा कि उन्वान से जाहिर है कि शायर के मुखातब कौम के नौजवान हैं, वो नौजवान जिन पर मुल्क व कौम की खिदमत की बड़ी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो मुस्तकबिल के ख़तरों से बेखबर, ख्वाब गफलत में गिरफ्तार है। ये वो नौजवान हैं जिनकी मेहनत और जद्दोजहद से मुल्क व कौम का मुस्तकबिल संवर सकता है। एक जानिब उन्हें अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म व जबर का पामरवी से मुकाबला करना है, तो दूसरी जानिब जुमूद की शिकार और बेअमली में गिरफ्तार अपनी कौम की रहबरी का फरीज़ा भी अदा करना है। अगर वो हरकत व अमल और जुहद पैहम की दौलत से मालामाल हैं,
और उन्होंने अपनी नौजवानी की क़ुव्वत इल्म व फ़न के हुसूल में खर्च की है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुल्क मुस्तक़बिल में तरक्की करेगा और आइंदा नस्लें अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगी। मुल्क में अमन व सुकून और राहत व खुशहाली का दौर दौरा होगा। पहले बंद में शायर कौम के नौजवानों से खिताब करते हुए कहता है कि ऐ कौम के नौजवानों, गफलत की नींद से बेदार हो जाओ, इससे पहले कि रात की तारीकी से सुबह नमूदार हो जाए। तुम्हें आज वाले दिन के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाना चाहिए। दूसरे बंद में शायर कहता है कि मेरी गुफ्तगू में कुछ तल्ख बातें भी हैं, लेकिन इसका मकसद ना तो नुक्ताचीनी है, क्रिटिसाइज नहीं है, और ना ही तुम्हारे दिलों को तकलीफ देना। मेरा मकसद तो सिर्फ यह है कि मैं तुम्हें गहरी नींद से बेदार करूं और ऐशो आराम की वजह से तुम पर जो गफलत तारी है उससे आगाह करूं। तीसरे बंद में शायर नौजवानों को नसीहत करता है कि जिंदगी बहुत छोटी है, मुख्तसर है, और इसमें नौजवानी का ज़माना और भी मुख्तसर है। लिहाजा ऐ नौजवानों, होशियार हो जाओ कि अहद शबाब यानी जवानी चमन में आने वाली बहार की मानिंद है, जो बहुत मुख्तसर अरसे के लिए आती है। सामीन, आपने चकबस्त की इस नज़्म का मुताला किया, इसके क़िराअत की इसका मुताला किया, आपने महसूस किया कि इसके एक एक जुमले में, एक एक लफ्ज़ में, एक एक हर्फ में कौम की मोहब्बत का दर्द भरा हुआ है। ऐसी नज़मों को हमें तन्हाई में भी और सबके सामने में भी बार बार पढ़ना चाहिए, ताकि हमारी दिल में कौम की मोहब्बत का जज्बा वो तरोताज़ा रहे। इसमें अमल का भी दर्स दिया गया है और कौम की मोहब्बत का भी दर्स दिया गया है। अखलाकी एतबार से और नसीहत के एतबार से ये इंतहाई मुअस्सिर नज़्म है। शुक्रिया। Do you wish to be part of a television studio like this, or any other media system, or already part of any media system, want to enhance a new set of skills? Welcome to School of Journalism and New Media Studies. Here in the School of Journalism and New Media Studies, we are offering program for all set of people to learn and enhance their media skills. The vision of School of Journalism and New Media Studies is to generate a new set of professionals in the area of media and communication studies with understanding about role of media in the national development and global understanding. We offer innovative programs in the field of journalism and mass communication that sets the benchmark of high quality learning and teaching process at the national level. We offer these programs across the country with the help of our regional network as well as study center. Same manner, many of our programs are offered through online mode with a sophisticated learning management system. SOJNMS offers programs from PhD in journalism and mass communication till certificate level. We have masters in journalism and mass communication. The eligibility is bachelor's degree, and we are introducing this program in 3 languages: Hindi,
Tamil and English. Students from national and international students can join either through online mode as well as in the distance mode. We have 4 postgraduate diploma programs, specialized areas in the field of development communication, digital media, electronic media, and journalism and mass communication program. And नमस्ते प्रिय दर्शकों, मैं डॉक्टर सोनिया आज आपका स्वागत करती हूँ भारतीय दर्शन में काल की अवधारणा इस विषय की चर्चा में। तो जैसे कि हम पिछली कई बार से ऐसा पढ़ रहे हैं कि काल का स्वरूप क्या है, तो वेदों से लेकर के भारतीय ज्ञान परंपरा के जितने शास्त्र हैं उन सब में हम काल के तत्व को किसी न किसी रूप में अवश्य ही पाया है। तो आज जो चर्चा करेंगे वो है दर्शन। तो दर्शन इस विषय को समझने के लिए थोड़ा सा हम इस शास्त्रीय परंपरा के इतिहास को देखेंगे कि जैसे ज्ञान इसी शब्द का ही इंग्लिश में हम नॉलेज कहते हैं, इसी ज्ञान को ही और ज़्यादा संस्कृत निष्ठ भाषा में वेद कहा जाता है। वेद शब्द का अर्थ होता है विद ज्ञाने, जो विद धातु से बना है। वेद इस शब्द की जो मूल धातु है जिससे यह शब्द बना है वह है वेद। संस्कृत भाषा के जितने शब्द हैं उन शब्दों में एक धातु होती है। धातु अर्थात इंग्लिश में कहें रूट, बट धातु का अर्थ है उस शब्द का अर्थ जिस पर निर्भर है, उस तत्व को भाषा में उस तत्व को धातु कहा जाता है। जैसे धातु स्वयं, इस शब्द में भी धा और तु ये 2 शब्द हैं, वर्ण हैं। धा ये एक रूट है जिसका अर्थ होता है धारण करना, और तू जो लगा है ये एक प्रत्यय है, सफिक्स है। तो मूल जो अर्थ है एक शब्द का वो उसमें छिपी हुई धातु में होता है। तो वेद इसका अर्थ है ज्ञान। तो जिसको हम ज्ञान आज हम कहते हैं उसी को ही संस्कृत निष्ठ भाषा में वेद कहा जाता है। और ये जो ज्ञान है ये प्रकृति के ही तत्वों पर आधारित है। वहीं से ही मनुष्य अर्जित करता है, सीखता है, अनुभव करता है, साक्षात्कार करता है। जिसका जितना आध्यात्मिक स्तर या बौद्धिक स्तर जितना सूक्ष्म है, साधना है या बहुत सारे तत्वों को मिला करके सृष्टि के ये तत्व उस व्यक्ति के सम्मुख अपने स्वरूप को प्रकट कर देती हैं। ऋग्वेद का मंत्र आता है उतत्व पश्यन्य ददर्शम वाचम उतत्व शिण्वन्न शिणोति ये नाम, कि किसी के सामने तो ये प्रकृति का ज्ञान अपने स्वरूप को ऐसे प्रकट कर देता है कि जैसे कोई स्त्री अपने पति के सम्मुख अपने स्वरूप को प्रकट करती है। तो उदाहरण दे के समझाया। और कुछ ऐसे हैं कि जो उसको देख करके भी नहीं देख पाते हैं। तो ये जो ज्ञान, जैसे कि हम आज आधुनिक समय में समझते हैं कि सेब को गिरते हुए देख करके न्यूटन ने एक गुरुत्वाकर्षण इस नियम को निकाला, तो सब कुछ कोई गिरते हुए देख रहे हैं, तब किसी के अंदर वह ज्ञान ऐसे प्रकट हुआ और उसके आधार पर आगे बहुत सारे और ग्रंथों की रचना होती चली जाती है। तो ऐसे ही वेद जो ज्ञान, जो प्रकृति या एक अनादि तत्व का एक गुण है, उस ज्ञान को ही वेद कहा जाता है। और वो ज्ञान ऐसा नहीं कि उसके अंदर सब कुछ पहले ही लिखा, ज्ञान अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं। हर एक अब तक मनुष्य सीख रहे हैं, सीखते जाएंगे, नए नए आविष्कार या खोजें होती रहती हैं। तो वो ज्ञान जो फंडामेंटल मौलिक ज्ञान है, कुछ तत्वों का बेसिक ज्ञान, जैसे उदाहरण से हम समझें कि किचन में अगर हमें कुछ खाना बनाना है तो उसके लिए बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं
उनके हमें गुण पता रहते हैं कि हल्दी का क्या गुण है, जीरे से क्या होगा, किस सब्जी में आलू का क्या टेस्ट है, उसको किसके साथ मिला सकते हैं। और उन मौलिक तत्वों के उन गुणों का पता होने के बाद उनके आधार पर आज तक हम नए नए पकवान बनाते हुए आ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ऐसे ही वो जो ज्ञान सृष्टि के मौलिक तत्वों का मौलिक आधारभूत ज्ञान जिसको वेद कहा जाता है, वो ऋषियों के द्वारा अनुभव हुआ, साक्षात्कार हुआ, उनको उन्होंने रियलाइज किया, प्रैक्टिकल करके किया। तो इसलिए उनको 4 अलग अलग भागों में, जिसको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कहा जाता है, इन वेदों में इनके शब्दों के आधार पर विषय अलग अलग हैं। जैसे ऋग्वेद ज्ञान और स्तुति पर आधारित है, वह प्रकृति के तत्वों की स्तुति करता है। स्तुति का अर्थ हम सामान्य रूप से प्रशंसा लेते हैं, पर प्रशंसा शब्द का अर्थ केवल चापलूसी या बड़ाई वाला नहीं, बल्कि जब हम किसी के गुणों को बताते हैं तो गुणों को बताना भी स्तुति कहलाता है। तो ऋग्वेद में ज्ञान तत्व है। यजुर्वेद, यजुर इस शब्द का अर्थ होता है कर्म। तो उस ज्ञान पर आधारित कर्म की व्याख्या जिन मंत्रों के माध्यम से की गई है उनको यजुष, और उन सब मंत्रों का जो संग्रह है वह यजुर्वेद कहलाया। ऐसे ही ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भी हैं। परंतु जब वेदों का पठन पाठन और जब हमारा बौद्धिक स्तर नीचे आता है तो सीधे सीधे उन वेद मंत्रों के माध्यम से ज्ञान एक से दूसरे तक नहीं समझ में आया। उसके बाद ऋषियों ने वेदों की व्याख्या के लिए ग्रंथ बनाए। तो जो प्रथम व्याख्या ग्रंथ हैं वेदों की, उनको कहा जाता है ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें उन वेदों का जो कर्म प्रधान अर्थ है वह सबसे अधिक बताया गया कि इसमें वेद क्या कहने चाहते हैं। उन सब की व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में की गई। तो वहाँ पर हर एक वेद का ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग है, हर शाखा का, वेद की भी शाखाएं हैं अलग अलग, सबके ब्राह्मण ग्रंथ अलग हैं। इसी श्रृंखला में ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक ग्रंथ आते हैं। आरण्यक ग्रंथ क्या हैं कि जो वेद की और सरल व्याख्या करके, ब्राह्मण ग्रंथों का भी पठन पाठन कम हुआ, समझना समझाना कम हुआ, तो उनके आधार पर आरण्यक ग्रंथों का रचना की गई। तो आरण्यक ग्रंथों में वेदों में कर्म भी है, ज्ञान भी है और अध्यात्म की व्याख्या भी है। तो कर्म कांड में जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनमें कर्म की व्याख्या ज़्यादा हुई, आरण्यकों में कर्म से ज़्यादा अध्यात्म की व्याख्या होती है। परंतु वही फिर उसके आगे आलस्य में नहीं पढ़ना पढ़ाना हुआ, बौद्धिक विक्षिप्तताएं बढ़ी हैं, तो उपनिषदों का रचना हुई। तो वेदों का जो सार है, जो अध्यात्म है, जो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यक एक आधारभूत आवश्यकता बताई कि ज्ञान अर्जित करके उसको करना क्या है। क्या केवल ये जान लेना ही कि इन दो तत्वों को मिलाने से अणु बम कैसे बनेगा, कोई नई रिसर्च कैसे होगी, क्या ज्ञान का उद्देश्य केवल भौतिक उन्नति ही या संसार ही का ही उन्नति करना है, या उसका दूसरा उद्देश्य भी है। तो उस मानव की उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो ज्ञान जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, वह संक्षिप्त रूप में, सार रूप में उपनिषदों में प्राप्त होता है। तो ये यहाँ तक तो वैदिक वाङ्मय कहलाया। इसके बाद भी वेदों के इन वाङ्मय को पढ़ने के लिए आगे 6 वेदांगों की रचना होती है। 6 वेदांग को समझना भी अब वर्तमान में अगर बात करें, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इनको पढ़ना उतना ही दुरूह है जितना कि वेद को भी। इसलिए पूरे वैदिक वाङ्मय के सार को, उनकी एक अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को, कि आपको कोई शब्द लिखा हुआ है उसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, परंतु वेद के संदर्भ में या वैदिक साहित्य के संदर्भ में उन शब्दों का अर्थ कैसे होगा, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए दर्शन है। तो दर्शन जो ये शब्द है, इसमें देखिए दृश्य वही धातु जिसका अर्थ होता देखना। तो क्या देखना? क्या अब ऐसे सामने देख रहे हैं, यही देखना मात्र ही दर्शन कहलाता है? तो सामान्य अर्थ तो यही है कि देखना, पर किसको देखना, किस माध्यम से देखना और क्या देखना वास्तव में दर्शन कहलाता है। तो इसके लिए ऋषियों ने खूब ऊहापोह की। तो उन्होंने कहा जो हम इस पूरे सृष्टि को देखते हैं वो देखने का एक माध्यम या कहीं नजरिया, हमारा दृष्टिकोण क्या है, वह दर्शन है। तो उनमें से 6 दर्शन बनते हैं, जैसे कि है पहला
मीमांसा, जो इस सृष्टि को कर्म की व्याख्या करता है। सृष्टि में कर्म कैसे हुआ, वेदों का अर्थ उसके आधार पर किस रूप में किया जाना चाहिए, ये मीमांसा दर्शन में बताया जाएगा। वैशेषिक, जिसमें विशेष ये शब्द आया है, उस सृष्टि के ही विशेष तत्व की व्याख्या वैशेषिक दर्शन में की जाती है। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन में जिसमें कि प्रमाणों के आधार पर किसी तत्व का, कि कोई चीज आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, आपका सत्य अलग है, मेरा सत्य अलग है, तो तब कौन सा सत्य वास्तव में वास्तविक है? सत्य एक ही होता है। इसलिए उसकी प्रमाणों के आधार पर, तर्क के आधार पर उस वस्तु के मूल तत्व को जानना ही न्याय का विषय है। योग, उस सृष्टि का जो उपादान कारण, जिसको कि हम स्वयं मनुष्य अपने चित्त वृत्तियों का रोकना या उस ईश्वर विशेष की प्राप्ति जिसने यह ब्रह्मांड बनाया, उसकी व्याख्या योग दर्शन में। सांख्य दर्शन, सांख्य संख्या से बना है, कि जिसमें संख्या, प्रकृति के जो पदार्थ हैं उनको कैलकुलेट करके बता दिया गया, वो सांख्य दर्शन का विषय कहलाता है। और अंतिम वेदांत दर्शन, जो कि वेदों का अंत, जिसमें कि इस ब्रह्म की व्याख्या की गई है विशेष रूप से, वह वेदांत दर्शन है। तो इन 6 दर्शनों के माध्यम से अगर हम देखें कि काल क्या है, तो मुख्य रूप से काल की व्याख्या हम वैशेषिक और सांख्य दर्शन में ही पाएंगे। जो वेदांत है, मीमांसा है, न्याय है, उन और योग, उनमें कहीं पर भी किसी सूत्र में काल शब्द को लेकर के कोई सूत्र नहीं बनाया है। हाँ, योग दर्शन में जहाँ प्रमाणों की व्याख्या है, या न्याय दर्शन में जहाँ प्रमाण की व्याख्या की जा रही है, अनुमान प्रमाण बताया, तो उस समय काल की एक दूसरे कॉन्सेप्ट में व्याख्या हो रही है। पर यहाँ हम मुख्य रूप से वैशेषिक दर्शन, तो देखिए वैशेषिक दर्शन में वो बताते हैं कि इस पूरी सृष्टि में आपके सामने 6 पदार्थ हैं। एक है द्रव्य, गुण, कर्म, ऐसे करके उन्होंने 6 बताए। 6 में से प्रथम है द्रव्य। द्रव्यों को फिर गिनवाते हैं कि कितने द्रव्य हैं, पदार्थ हैं। तो पूरी सृष्टि के इन पदार्थों को, द्रव्यों को उन्होंने 9 भागों में बांटा, कि हमारे पास पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य हैं। और द्रव्य किसे कहा गया, इसकी परिभाषा भी दी कि जिसके आश्रय गुण या क्रिया होती हैं वो द्रव्य कहलाती हैं। जैसे हम अगर बाजार में जाकर के कहें कि मुझे मीठा या खट्टा खाना है, तो ये मीठा या खट्टा कोई अलग से निकाल के नहीं देगा। ये दोनों गुण किसी ना किसी पदार्थ पर, किसी मिठाई पर या किसी खट्टी कोई वस्तु होगी, उसमें से हम मिठास या खटास को पा सकते हैं। तो ये गुण हैं जो किसी ना किसी एक अन्य चीज पर आधारित होते हैं। स्वतंत्र रूप से कभी भी कोई मिठास या खटास नहीं मिलेगा। ऐसे करके वहाँ पर पदार्थ की भी परिभाषा दी गई है। तो ऐसे ही उन द्रव्यों पर क्रिया भी आश्रित होती है, जैसे दौड़ना, चलना, लिखना। ये जो लिखना है ये अकेला कभी भी नहीं दिखाई देगा, कोई व्यक्ति लिख रहा होगा या किसी में ये एक्शन किसी पदार्थ पर, किसी एक वस्तु पर निर्भर है। इसलिए कहा गया कि द्रव्य कौन है, इस संसार में जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं उनमें द्रव्य की कैटेगरी में कौन सी चीज़ें आएंगी कि जिन पर गुण और क्रिया आधारित हो। और उसी द्रव्यों की गणना में काल को भी गिनाया गया है। तो क्या समय भी ऐसा एक द्रव्य है कि जिस पर कोई ना कोई गुण या क्रिया आधारित होती हो? जैसे कि खटास या मिठास, हमें किसी रसगुल्ले में से मिठास का पता चलता है, हमें किसी खट्टी चीज़ से, इमली से खट्टे का पता चलता है। तो ऐसे काल का कहाँ से बोध होगा? तो इसके लिए उन्होंने कहा कि काल को हम ऐसे प्रत्यक्ष नहीं देख सकते सामने सामने, उसका अनुमान किया जाता है। अनुमान के माध्यम से ही होता। किन चीज़ों से अनुमान होगा कि जहाँ पर कोई चीज़ पहले, बाद में और एक साथ हो रही हो, आगे पीछे होना हो, ये जो क्रियाएं हम कह रहे हैं, बोल रहे हैं, इन शब्दों से वहाँ पर पता चलता है कि वहाँ काल है। ये वैशेषिक का है। और काल के गुण क्या हैं? तो काल का सबसे पहला जो गुण बताया गया वह है संख्या, कि संख्या आधारित होना काल का प्रथम गुण है, संख्या होना। तो संख्या क्या?
जैसे हम 1 2 3 4 ये बोलते हैं, ये काल के ही गुण हैं, उसकी प्रॉपर्टीज है। इनसे हमें पता चलता है कि कोई चीज एक कब कहलाएंगे कि उसने एक राउंड लगाया। एक किस चीज को नाम दिया जाता है? तो कहा जाता है जब कोई चीज अपना वहीं पर ही पूरा एक सर्कल या वापस उसी जगह पर आ जाती है, उसको एक नाम दिया जाता है। तो जैसे सबसे छोटा जो पदार्थ इसमें बताया गया है वैशेषिक में, वह परमाणु होता है। और परमाणु जो है वो क्या है कि एक पॉइंट डॉट है, उसकी कोई घूमने की आवृत्ति नहीं होती है, इसलिए उसको न मान करके उससे बड़ी इकाई जो अणु जब अपना एक पलटा पूरा ले लेता, पलटता है एक बार में, उस समय को कहा गया है वह क्षण। ऐसे ही जब 2 क्षण मिलते हैं, आगे और काल की इकाइयां बनती चली जाती हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है, वैशेषिक दर्शन में काल को एक द्रव्य माना गया और द्रव्य की जो परिभाषा दी गई कि द्रव्य पर गुण या क्रिया आधारित होती हैं, तो जो काल नामक द्रव्य है, इस पर गुण आधारित कौन से हैं? संख्या होना, परिणाम होना, पृथक होना, संयोग होना या वियोग होना। क्योंकि जब वस्तुएं बनती, पदार्थ बनते हैं इस सृष्टि में, या तो किन्हीं चीजों में भेद होता है, उनके टुकड़े होंगे तब 2 पदार्थ बनते हैं, या कभी 2 मिलकर के एक बनता है। तो ये संयोग विभाग होना, आगे पीछे होना, ये सब पहचानों से हमें काल का बोध होता है। काल वास्तव में अनित्य पदार्थों की ही जो परिवर्तन है उनको बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। नित्य पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि आकाश है, स्पेस जिसको कहा, वो एक तरह से नित्य है। उस नित्य पदार्थ में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसमें हम व्यवहार के लिए समय की आवश्यकता नहीं होती। अनित्य पदार्थों में व्यवहार के लिए ही हमें समय की आवश्यकता होती है, जिसको काल कहा जाता है। वही हर एक शब्द की अगर हम धातु देखेंगे तो कल संख्याने, काल शब्द की है संख्या, जहां हम संख्या बता रहे हों, जहां हम गिन पा रहे हों। और संख्या बताना किसी चीज की एक निश्चितता को बताता है। आपने एक बोला तो स्पष्ट है कि कोई चीज एक है, उसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं रहता है। तो संख्या समपूर्वक ख्या धातु है। ख्या जैसे कि कहते हैं ना, उसकी ख्याति बहुत ज्यादा है, उसका आख्यान किया जाता है, व्याख्या, ये शब्द सुना होगा। तो ख्या जो रूट है उसका अर्थ होता है कहना। तो जो समपूर्वक ख्या, इस 2 शब्दों से संख्या शब्द बना है, उसका अर्थ क्या होगा? जो अच्छी प्रकार से किसी चीज को डिफाइन कर देती है। अगर हमने कहा है कि पेन एक लगा दिया है, तो इस एक लगाने से इसके अंदर 2 हैं, 3 हैं या क्या है, ये किसी तरह का कोई उसमें संशय नहीं रहता है। तो निश्चयात्मकता को बताना क्या है? काल की है एक गुण है। तो इस तरह से काल पर गुण भी आश्रित हैं और क्रिया भी आश्रित है। क्रिया क्या है कि जब अनित्य पदार्थों की उत्पत्ति होती है, उनका बनना होता है, तो एक चीज में परिवर्तन होगा, तो अगला जो चीज बनी है परिवर्तन होने के बाद, उसकी दृष्टि में वह पिछली चीज क्या होगी? पिछला हुआ, अगला हुआ। ये कहना भी क्या है? काल का ही एक क्रिया है, व्यवहार है। और कई बार 2 घटनाएं एक साथ हो रही होंगी, उस समय युगपद है। कई बार एक में परिवर्तन जल्दी हो रहा है, तेज हो रहा है, तो ये जल्दी होना, तेज होना, या एक तरह से कहें जो गति है, किसी भी तरह की गति, वो काल ही है। चाहे वह ग्रहों की गति हो, चाहे वह पृथ्वी की गति हो, कोई भी गति है, उसको हम काल कह सकते हैं। और इसी के आधार पर ही वैशेषिक कार जब अपने दर्शन में इस सृष्टि के पदार्थों की, द्रव्यों की चर्चा की, तो वहां पर काल को भी एक द्रव्य के रूप में माना गया है। तो ये है वैशेषिक के अनुसार। सांख्य दर्शन में मुख्य रूप से सृष्टि की प्रक्रिया बताई गई है कि सृष्टि में सबसे पहले क्या था, ये सृष्टि कैसे बनी होगी। तो उसमें कहा जाता है कि 3 तत्व हैं, सत्व, रज और तम। जब ये तीनों तत्व सम अवस्था में हैं, सेम रेशो में हैं, एक जैसे अनुपात में, मान लीजिए 100 पूर्णता का नाम है, तो 33 रेशो में जब ये हैं, अपनी मूल अवस्था में है तीनों चीजें, तब कोई भी सृष्टि नहीं होती। यहाँ ध्यान रखिए, एक सृष्टि होती है, एक प्रकृति होती है।
जब दर्शन की भाषा में बात करेंगे, एक सृष्टि और एक प्रकृति। प्रकृति होता है किसी भी चीज का अपना मूल स्वरूप। तो जो ये संसार हमें इतना दिखाई दे रहा है, इतने रंग रूप, इतने खाद्य पदार्थ, इतनी तरह की विविधताएं इस संसार में जो हमें प्रकृति के गत दिखाई देती हैं, ये सब सृष्टि हैं। इस सृष्टि के पीछे प्रकृति होती है दर्शन की भाषा में। और प्रकृति क्या है? 3 एलिमेंट्स, सत्व, रज और तम। इसको अगर हम साइंस की भाषा में, इंग्लिश में अनुवाद कहें, कोई कहता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आदि, जो 3 एलिमेंट्स हैं जिसको किसी भी पदार्थ में सबसे सूक्ष्म रूप में ये 3 चीज़ें रहती हैं। उसी तरह से भारतीय दर्शन सांख्य में कहा गया कि सत्व, रज, साम्य अवस्था प्रकृति ही, कि जब सत्व, रज और तम ये तीनों समान अवस्था में होते हैं, उस समान अवस्था को प्रकृति कहा जाता है। और जैसे ही इन तीनों तत्वों में किसी भी प्रकार का रेशो आगे पीछे या उनमें कोई बैलेंस बिगड़ता है, वहाँ से ही सृष्टि का निर्माण होना शुरू होता है। तो इस तरह से वहाँ पर उसके बाद जैसे 3 तत्व गिने, सत्व, रज और तम, उसके बाद जो पहला एलिमेंट्स बनता है सृष्टि में, उसको महत कहा। सत्व, रज, तम साम्य अवस्था प्रकृति ही, प्रकृतेर महान, जो ये कहा कि महान बना। उसके बाद उससे पंचतन मात्राएं, स्थूल तत्व, महाभूत आदि जो ये गणनाएं की गई हैं, इस तरह से उन्होंने कहा है कि 25 तत्व हैं इस सृष्टि में। तो उन 25 तत्वों की व्याख्या करते हुए या गणना करते हुए सांख्य दर्शन में काल का सूत्र नहीं है। वहाँ पर उन्होंने ये जरूर समझाया कि जब महत के बाद जो आगे सृष्टि में तत्व बनेंगे, तो वहाँ पर आकाश की भी उत्पत्ति होती है, आकाश बनता है। और उसी आकाश से अलग दिक और काल कुछ भी नहीं है, अर्थात आकाश के ही 2 अन्य नाम दिशा और काल, ये 2 चीजें और हैं। तो सूत्र कहा है दिक कालौ आकाशादिभ्य है, कि जो ये दिशा और काल हैं, ये आकाश आदि जो तत्व पहले व्याख्या कर दिए हैं, उनसे अलग कुछ नहीं है। जैसे आकाश नाम किस चीज का है? ऐसे नहीं कि जो हमें नीला ऊपर ब्रह्मांड दिखाई देता है वह आकाश। आकाश स्पेस, जो जगह जहाँ हम रहते हैं, किसी भी चीज की सत्ता के लिए एक स्पेस आवश्यक होता है, आकाश की आवश्यकता होती है, उसको आकाश कहा गया। तो अब कोई चीज मेरे से लेफ्ट साइड है तो वो मेरे लेफ्ट है, बट उसके राइट में हूँ। तो लेफ्ट और राइट होना, दाएं बाएं होना, दिशा एक उत्तर की ओर है, मेरे से उत्तर कोई चीज है, उसके लिए उत्तर कोई दूसरी चीज है। तो ये उत्तर और दक्षिण होना, ये सब क्या चीजें हैं? सापेक्ष हैं। उस एक पूरा जो एक आकाश है इतना बड़ा, उसमें व्यवहार करने के लिए हमें किसी चीज को बीच में सेंटर मान करके उसके ही सापेक्ष उत्तर, दक्षिण, पूर्व, आगे पीछे, दाएं बाएं, इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। वास्तव में ये क्या है? दिशाएं हैं, पर आकाश का ही एक रूप है, व्यवहार है। आकाश में हमें आवागमन के लिए एक मीडियम की जो जरूरत होती है, किन्हीं भी 2 पदार्थों के आने जाने या होने के लिए, उस चीज को ही आकाश कहा जाता है। और वह आकाश तत्व व्यापक है, विभू है। उसको व्यवहार के लिए उसमें कुछ उपाधियां बनानी पड़ती हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि सप्ताह, अगर एक हमारे पास काल की एक यूनिट होती, अवधि, अब इस समय हमें व्यवहार करना है कि अब 1 मिनट के लिए आए, 2 मिनट, ऐसे हम काल की छोटी छोटी इकाइयों का उपयोग करते हैं। तो बड़ी इकाई से हमेशा व्यवहार नहीं हो सकता, उसके हम छोटे एक समय में भी वर्तमान में जहाँ रहते हैं उसके लिए व्यवहार की आवश्यकता होती है। इसलिए आकाश के व्यवहार के लिए जहाँ पर हमें पूर्व पर, आगे पीछे, दाएं बाएं ये जो व्यवहार करते हैं, इनको दिशा कहा गया है। ये उस व्यापक अखंड काल आकाश की ही क्या है? खंड इकाइयां हैं, सोपाधिक इकाइयां हैं। ऐसे ही काल भी व्यापक तत्व है, वह नित्य है, अनादि है, वो हमेशा रहता है। उसके जो हम क्षण, मुहूर्त, पल, घटी, घंटा, मिनट, दिन, पक्ष, मास जो ये व्यवहार करते हैं, ये उसके कुछ कुछ खंडों के ही एक नामकरण मात्र हैं। वैसे संपूर्ण काल एक है, वह व्यापक है, आकाश के समान। ऐसे ही
जैसे कि आकाश में जहाँ पर हम दाएं बाएं या उत्तर पूर्व ये व्यवहार कर रहे हैं, उस चीज़ का नाम दिशा है। ठीक उसी तरह काल भी, जो हमारे उस एक पदार्थ में जो घटनाएं घट रही हैं, परिणाम हो रहे हैं, उनको कैलकुलेट करने का, उनको कहने के लिए जो हम बोलते हैं, जैसे हम मन में जो विचार कर रहे हैं, उस विचार में पहले एक विचार आता है, उसके बाद दूसरा विचार आता है, उसके बाद तीसरा आया। तो जो ये कहा ना कि पहले ये, उसके आधार पर दूसरा, तो ये पहले होना बाद में होना, ये काल के कारण ही हम व्यवहार करते हैं। कोई घटना आज घटी है और उसके बारे में हम परसों सोचेंगे तो ये आज वाला उसके लिए एक भूतकाल हो गया है। तो जो ये अंतःकरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं, मानव के शरीर के अंदर जो परिवर्तन है, जो बाह्य नहीं है, जैसे बाह्य परिवर्तन क्या है, कोई घटना इस पदार्थ से लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, ये परिणाम दिशा के कारण होंगे। उस पर्टिकुलर उस पदार्थ के अंदर जो परिणाम घटित हो रहे हैं, उनको कहने के लिए हम काल का उपयोग करते हैं। वास्तव में काल चित्त के परिणामों की व्याख्या है, या कहें सृष्टि के जो परिवर्तन निरंतर हो रहा है, वो परिवर्तन ही क्या है, वास्तव में काल है। जैसे कहा था, सांख्य दर्शन कहता है कि सत्व रज तम ये प्रकृति है मूल। जैसे ही इनमें परिवर्तन होना शुरू होगा, तब सृष्टि की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो वहीं से ही जो हम काल जिसको कहते हैं, वो परिवर्तन का ही एक दूसरा नाम है। तो इस तरह से जो काल तत्व है, यह अकेला एक विज्ञान का विषय नहीं है, ये कोई एक वस्तु नहीं है कि जिसको हम सीधा सीधा यह बता सके कि इज इक्वल टू दिस इज काल। तो काल विज्ञान और दर्शन इन दोनों का मिला करके एक गंभीर विषय बनता है, और दर्शन की अवधारणा को समझने से ही हम काल की अवधारणा को समझ सकते हैं। क्योंकि जहाँ दर्शन, भारतीय दर्शन आत्मा के स्वरूप को समझता है, आत्मा है या नहीं है, शरीर के साथ मरती है या नहीं, इस आधार पर काल की अवधारणा भी परिवर्तित होगी। अगर शरीर के साथ ही आत्मा भी नष्ट हो जाएगी तो काल का कॉन्सेप्ट कुछ अलग ही होगा। और अगर इस शरीर के साथ आत्मा का विनाश नहीं होता, वह फिर से जन्म लेती है, तो इस कारण वह एक चक्रीय काल बन जाता है कि वह समय फिर से आता है, फिर होता है, पात्र उसमें बदलते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें, भारतीय दर्शन में वैशेषिक और सांख्य, इन दो दर्शनों में सीधे सीधे काल के विषय में, अन्य दर्शनों में प्रमाणों की व्याख्या करते हुए काल के बारे में अवश्य बताया गया है। और सबके अनुसार काल एक विभू, व्यापक, अनंत पदार्थ, द्रव्य है, और उसकी व्यवहार जो हम करते हैं, क्षण, निमेष, पल, घटी, मास, दिन, वर्ष आदि, ये उस अनंत काल की लौकिक व्यवहार की अनित्य इकाइयां हैं। तो इस तरह से भारतीय दर्शन के अनुसार काल तत्व व्यापक और अनादि, यह आज की कक्षा में हमने समझा। आगे ज्योतिष के आधार पर देखेंगे। धन्यवाद। We wear clothes on a daily basis. But have we ever wondered, where do our clothes come from? Who makes our clothing? And who are the people and the process responsible for the whole manufacturing of our clothing? If you want to know more about this, Indira Gandhi National Open University from the School of Continuing Education has launched a program which is Certificate in Apparel Merchandising. There are many benefits after doing this program. You can become a designer in various fields. It can be fashion designer, apparel designer, costume designer, or even a textile designer. One can also work as a fashion consultant. Research and development is another field which one can take up after doing this certificate course. Going into academics is another perk after doing this program.
Getting into fashion houses or fashion studios as an intern is also a very good option post doing the certificate in apparel merchandising. The basic eligibility of the program is 10 plus 2. The duration of the program is 6 months to 2 years. The program is also available for both the admission cycles, which is July and January. The exams are conducted twice a year, in June and December. So what are you waiting for? Join this program and get an enriching knowledge in the field of apparel merchandising. And to do so, you can log on to the official website of the university, www.ignou.ac.in. Namaskar. Today, I, Professor Shachi, along with my colleagues Dr. Diksha Dave and Dr. Venkatramanan, is going to give a brief introduction or bird's eye view of a newly launched master's program that is MA in Environmental Studies. Dear learner, the School of Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies has launched from January 23 a new master's program that is MA in Environmental Studies. The eligibility criteria for this program is graduate in any discipline, any learner who has done graduation in any discipline, whether it is science, art, engineering, or management, maths, technology, engineering, any discipline, they are eligible for this program. The course code or the program code of this program is MA-EVS. The program is initially offered in English. The learners, after completing this program, they can get various jobs. There are tremendous job opportunities after completing this program. But before giving the brief introduction about the program objective or about all the courses, target learners, I will just like to give a brief about how this course was developed, what was the reason behind this course development, and how and why we thought of offering MA in Environmental Studies from IGNOU. As we all know that we are confronted with many environmental problems. Environmental degradation coupled with climate change, urbanization and other developmental aspects are deteriorating the environment. In this regard, we all know the kind of problems we are facing, whether it is related to climate change, whether it is related to loss of biodiversity, loss of resources, kind of various type of pollution, whether it is water pollution, air pollution, noise pollution, or any other kind of pollutions, release of various type of chemicals which are causing different type of health hazard, and so on and so forth. So what I wanted to say is that we are facing number of environmental challenges. The environmental is deteriorating. So looking at the need for a knowledgeable workforce, this environmental studies program was envisaged. The main aim of this program is to develop a knowledgeable workforce which can develop a capacity or a knowledge related to various facets of environment. They can contribute towards the development of various policies, various programs, or they can work towards the betterment of environment. I will not go in detail the various type of government program which are
running, or which government is in the field of environment is taking, for whether it is Namami Gange program, Swachh Bharat mission, Swachhata Abhiyan, or Amrit mission, or related to sustainable city, national mission of climate change, and so on and so forth. So looking at the need to have a workforce, this program was developed. I will also like to mention about the LIFE program, that is Lifestyle for Environment, which our Honorable Prime Minister has launched in Glasgow in COP27 and COP26, and he has also focused on how with the sustainable lifestyle can be adopted and how the environment degradation can be stopped. The same way, there are number of treaties, number of programs which are launched by the government, and the learner will be getting all the details about the program, whether it is Paris Climate Change Agreement or any other agreement, various type of laws. We all know about the sustainable development goals, how they can be achieved. So without going in detail, I will request my colleague, Dr. Diksha Dave, to please give a brief introduction of program objective and about various courses that is being offered through this program. Dr. Diksha, please. Thank you, madam. Once again, hello to our viewers who are watching this program, which is on the newly launched program by SOITS on environment, that is Master of Arts in Environmental Studies. So learners, you must know, because you have gotten bird's view of an idea about the different aspects of the program and who can join and how it is useful for you in the present scenario. Let us now see what are the objectives of this program. So, number one objective is to demonstrate the interrelationship between the man-nature interactions. As we know that in the present times, there has been lot of interactions, both positive as well as negative, between we the human species and the other types of the elements that are there in the nature. So, let us explore the interrelationships. And having explored the interrelationships, the other objective is that to provide you the knowledge on various contemporary issues about the environmental challenges that the planet is facing. Learners, you are very much aware that these environmental challenges also have a kind of social perspective which is quite hidden. So when you do this program, you will be able to explore the contemporary environmental challenges, whether it is related to climate change, whether it is related to social inequalities, whether it is about urbanization, and so much of the kind. Then when you know about the issues, definitely there will be a need to capacitate you in the field of environment protection and sustainable development. Having said this, when you are aware about the challenges, you will be equipped. When you do this program, you will be able to see that what lies ahead, what you can do as an individual about these environmental challenges, and how madam has mentioned about sustainable development goals, which are to be achieved by 2030, how we can help, how the learners of this program can help to build that capacity to address those solutions. And when you have that capacity, you will be able to apply that knowledge in environmental management and achieve the sustainable development goals. So we have ambitious program objectives of this program, and this we thought of achieving by various courses that we have introduced in this program. So there are various courses ranging from environment specific domains to the interrelated areas. Learners, I will now let you know about the different first year and the second year courses of this program. On and all, there are 16 core courses, and you also have the option of selecting the electives. That is, it is up to you. Whatever field you are working, you can, according to your interest and your need, you can select the courses. So the program entirely is first year and the second year programs are there, which is divided into semesters. So when you look, you can easily see on the screen that we have the different programs in the first year, some in the first semester and some in the second semester. So in the first semester, we have the course on fundamentals of environment science and ecology,
which of course explores ecology, environmental science concepts, the basic ones. Then we have the course MEV 019 on environmental issues, MEV 015 on environmental pollution, control and management, MEVE 017. These are the course code. When you get enrolled in this program, you will be, becoming more aware of what these terminologies mean. But right now, you can see the type of courses that we are having. So there is a course on environment and society. And then we have a course on global strategies to sustainable development, where we can explore that what are the initiatives across the world which have been taken to achieve sustainable development goals. So definitely this provides a very interesting field of study. Then comes the second semester, where you will be studying about environmental impact assessment, which is the need of the hour. You can see the importance of the environmental clearances, which is very much required. MEVE 011 is about global climate change, which is of interest to many coming from the various disciplines. It explores the causes behind the climate change phenomena that is taking place, the mitigation and the adaptation measures which are essential, ranging from agriculture to planning of the cities and so much of so kind. So that is important. Then environmental legislations, urban environment, sustainable natural resource management. So these are the first year courses, and when you look at it carefully, you will find a kind of a basket, you can say, which contains so much to know and which contains the variety particularly, which will be of interest to our varied heterogeneous learners. Then in the second year, again, we have two courses which are compulsory, that is research methodology for environmental science and biodiversity conservation and management. Now here you can see on the screen, we have 6 courses, out of which you can select any 3. You may be interested in knowing about climate change assessment tools, or you may be interested in knowing about the hazards at the workplace, the occupational hazards, or climate change in society, social ecology, globalization and sustainability, environmental health and ecotoxicology, energy and environment, pertinent issues raised through these courses. Then the fourth semester, we have the courses on environment management, disaster management, issues and challenges in urban planning and development, and learners, to give you more clarity, to make you understand the concepts better, we have a program on the project work, which we will be telling you in detail when you enroll, that how you can carry forward the project work, what kind of topics you can take and how you can proceed with the project work. So I think this must be of great interest to you. A curiosity must be aroused in you to know more about these courses, how you can enroll in this program, what will be there for you to study, what kind of the resources you will be getting. So this is just the titles, but in that we have so much of updated material written by the experts in that area. So definitely it is a program which is of must for those who want to address the environmental challenges. Now I request my colleague Dr. V. Venkatram to please tell us about the target learners and what all is there in store for the learners who are interested in this program. Thank you, ma'am. Thank you very much. Indeed, it is a pleasure that we have launched this program, Master of Arts in Environmental Studies. If you look at the objectives, it's very clear that we are talking about the interaction that is existing between the environment and development. And the second important thing is that what kind of relation that human beings must have with the nature, the kind of man-nature interaction. So having said these objectives, for all the courses, all along from first semester, second semester, third and fourth semester, all along the bottom line, it talks about this kind of interaction. And it enables the students or learners to understand further, to find the solution, because that is the basic objective of this particular program. Because when you talk about capacity building, because the students will be capacitated to find the solution for the problem. And the problem lies with the issues. That is, environmental issues is the prime important factor has to be taken into account. That is the reason why, if you look at it, the first semester talks about the issues in front of you. The learners will be exposed to the issues at the local level, regional level, global level. In the particular program, what is it called? The course, environmental issues. Thereafter, if you look at it, there are umpteen number of challenges to the development.
whether you call it a sustainable development or economic development, these challenges have been earmarked. In fact, you'll be getting to know the possible impacts and what kind of the pathway, the trajectories, everything will be taught in the first semester, because it is in fact tailor-made to the students. Because when you go to the field or in exposed to the environment, you'll be coming to know the issues. So further, if you see all the courses in the first semester talks about, the very interesting thing is the climate change, because the time and again we are talking about climate change. It's a wonderful aspect, because as an issue, if you look at it, it's a global issue. You will come to know that when you understand climate change, it is having a drastic impact on every aspect of human beings, their well-being, their whether it's a standard of living, livelihood, or even whatever the activities you're talking about or you think about it. So that has been discussed in the first semester, and that in fact definitely it is meeting to the need of the learners and also our objective also. The second semester is very interesting indeed, because when we talked about the issues, we need to understand that we need to gauge the issues, whether it is occurring or not. For that, impact assessment is important. What kind of impact an issue can cause, and that has been dealt in the environmental impact assessment. The second important aspect of the second semester is that, because we need, having said the issues and the kind of impact also, we need to understand the research, the science behind it. That is well possible by having certain courses, whether it's in the biodiversity or a climate change or even the natural resource management. I'm talking about the natural resource management, sustainable natural resource management. So every aspect of the ecosystem that has been dealt in the second semester, because we need to understand what kind of services, what kind of functions the ecosystem is playing, and having said that particular thing, what kind of imbalances the human beings are causing. I'm talking about the ecosystem imbalances. So in the second semester talks about the science behind the ecosystem imbalances and how to cope up with this thing. When you talk about the science, you'll be tempted to know that what kind of research aptitude is required, what kind of ethical standard is required, and that has been taken forward to the third semester. So in third semester is very interesting. Again, it's interesting why. The basic purpose is that the learners will be having known the issues and the laws, the legislations and everything, they should have a kind of a research acumen. When I say research acumen, because it's a master's degree program, what kind of research attitude one should have it? Because so for that has been dealt in research methodology course in third semester. So very interestingly, there are certain electives also. So they know most of the issues. They know the science behind the issues also, but they may have certain liking for for instance biodiversity, liking for climate change, liking even for the waste management. So this is provided as in the form of electives. So it's kind of a basket of opportunities for the students, because they are free to choose the electives. So having said that, for instance waste management or biodiversity, so they will be understanding the conservation aspect, they will be understanding the ecosystem services, or in other words, there are many innovative technologies are coming up. So they will be knowing that innovative technologies, side by side they will be understanding how to exactly to do the research also. So this is a very important aspect, because this is an environmental studies program. So the research methodology is a very important thing that will be dealt in the third semester. And the fourth semester is very interesting. Dr. Diksha, the way has talked about the project, because whatever you have learned in the first semester, second and third semester, you will be implementing in terms of a small kind of an assignment. You take it for yourself and you'll do that on the field condition. So once you find out the solution, you can think about taking forward. That means you can have a practical solution. It can be implemented also in terms of the policy decisions of policy planning, even urban planning. Anything can be done, because that is an opportunity that is existing in this particular program. So this is a very interesting program. In fact, it's a hallmark of our initiative, because the environmental science, if you look at it, it's a very important aspect, because everything whatever we are talking about around us, we are talking about how best we can bring in the disciplines together. I'm talking about the multidisciplinarity and transdisciplinarity and a kind of a holistic education. When you talk about it, that is the best example possible is environmental studies, and this particular program is definitely a benchmark for you, because the opportunities Professor Sachisha has talked about. When he talked about the opportunities, she said kind of a multitude of opportunities she talked about it, because
I just talked about the objectives, and to meet the objectives, we have a series of courses. Having said the both things, the opportunities also many, and of course it all when the opportunities in your hand, because when you have everything, you must implement it, whether it's in the government department or even the social development. When you talk about social development, I'm talking about the non-governmental organizations also, and even the policy and even the ministries also. So it's in addition, what I would like to say is that you can create your own opportunities. Nevertheless, it is having opportunities. The particular program is having an opportunities in the ministries and the government sectors and the non-governmental sectors, even the consultants also. Many where you have it, but along with that thing, it is an emerging kind of thing. You can evolve yourself to meet the challenges. To add what Dr. Venkat has said, beside various ministries, there are a number of organizations like there are Central Pollution Control Boards, State Pollution Control Board, there is Wildlife Institution, there is Botanical Survey. There are a number of higher education avenue for doing the PhD or other higher education avenues are also there after completing this course. One more thing I would like to add over here, that the program is also in line with National Education Policy. As the National Education Policy, there is provision, or it says about provision of multiple entry and exit. Likewise, in this program also there is an option of after first year, one can, if somebody is unable to complete the program, they can take an exit with postgraduate diploma in environmental studies. And same way, after few years, if the learner wanted to complete their master's program, they can take the lateral entry in the second year and get the master's degree. So there are two provisions, that is, after completing first year, the program, they can take the degree, PG diploma in environmental studies, and they can anytime they can take lateral entry and exit. If learners wanted to know more about the program, they can go in the IGNOU website, that ignou.ac.in. The admissions for January sessions are open. The learner can take admission from IGNOU Samarth portal. They can, for more detail, the details are given in Common Prospectus, SOITS website. It is also, admission is available through Samarth portal also. Now, the target group. I will ask Dr. Diksha to please mention about the target group of the learner also. Yes, Madam has learners told you about the plethora of opportunities which exist for the learners, and since we have seen that with the option of exiting after completing 1 year, of course there are opportunities for many. If you look into the eligibility that we have put, that graduate in any discipline can apply for this program. So we have the target, we have targeted those, first of all, who are the fresh graduates, who may be working or who are seeking some kind of higher studies and want to know about the environmental processes and other related issues. They can join this program. Then we have a lot of NGO people who are providing consultancies, who are doing some kind of a research work. So in order to authenticate their work, the program is a must for them, so that they can have a kind of a proper knowledge about the work that we have been doing. So therefore we have the electives. For the different kind of sectors, we have different kind of electives. You can enroll, you can do these courses, and you can upgrade your knowledge. Then we have a lot of mid-career professionals, planners, policy makers. There may be certain there are entrepreneurs also who may be working in a sector, and they may be interested in knowing about these different issues. They can join this program. So we have targeted almost all the kind of sectors, all the kind of organizations, because as you know, it has become a necessary thing for the persons who are working, who have a long career ahead, to plan their work according to the environmental challenges which are coming up. So it is of interest, it is an opportunity which you must
I must say that you must grab this opportunity because the university provides you a lot of flexibility. If you are a working professional, if there is a time constraint, if there are other issues, if you are tied up with so much of other things, then also we give you the flexibility to study as per your pace. So when you enroll in this program, you will be able to know that what kind of flexibilities we are providing. There are so much of activities, there are so much of the resources apart from the online, the classes which you call it, and if you have the access to the material also. So in that way we can see that yes, different types of people, and we have seen in our other courses also we have the professionals from different streams who come and join this program, which are pertinent. And as madam has said, with the national education policy, it features all those kind of things. It has a multidisciplinary approach. As you have seen the course structures, you have seen the different courses, you can very well make out that it is not a kind of a one discipline specific, but it has an input from various disciplines. So it is multidisciplinary. Along with that, we have the exit option available, the lateral entries available, and of course the minimum duration of the program is 2 years. But yes, we give you the flexibility to complete it in 4 years. So that option is always there with you. So the learners, if you want to know more, you can always visit our website. The common prospectus is there, and the other resources are there from where you can get the complete information about the Master of Arts in Environmental Studies program, which is the need of the hour, and which definitely, if you are interested, you must definitely join this program. Just to give a recap of the program name is MA Environmental Studies. The program code is MA EVS. Eligibility criteria is graduation in any discipline. The program is offered in English medium. Minimum duration to complete the program is 2 years. Maximum duration for completing this program is 4 years. The total number of credits offered in this program are 80 credit, which are divided into 4 semester, 20 credit in each semester. In third semester, there are basket of optional courses which learner can take according to their own interest, their own need, and their own expertise. And altogether, to complete the degree, learner has to complete 80 credits, completing all core courses and elective courses. The fees for this program is 12,000, that is taken in 2 years. First year 6,000 plus 300 registration fee. In second year also, the learners has to re-register themselves for 6,300 rupees. So altogether, the entire fee for the program is 12,000 per program. If we say the major highlight of the program is flexible in nature, that you can, flexibility is one thing, that minimum 2 year, maximum 4 year. The second aspect is affordability. The program fee is very, affordable by everyone, that is 12,000 per year, per course. The program is in multidisciplinary and interdisciplinary in nature. We know that the mainstreaming of environmental consideration into economics and society is the need of the hour, is very important to achieve the sustainable development goals and sustainability. So the program take cares of the not only the environmental issues, environmental consideration, but it also talks about the societal aspects, and also about the economic challenges or how to achieve the sustainability. The next highlight of the program is that it is in modular form. The first year, after completing first year, the learner can get the degree in postgraduate diploma in environmental studies, and after completing they will be getting MA Environmental Studies. As far as the career options are concerned, there are different ministries, where the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, water ministry, or urban department, various type of Central Pollution Control Board and State Pollution Control Board, various institute, higher education, PhD, and so NGOs, and so on and so forth. So
I will, with this, if learners have any queries related to program, they can write to mail to given in the common prospectus. They can mail or they can, there are phone numbers are given. They can anytime call those number. They can mail whatever the information you wanted. We are there to provide you, and we assure you after completing this program, you will be having good knowledge, good aspects about all the environmental issues and how you can play an important role in environmental conservation, environmental management, environmental sustainability, and how you can contribute toward this various national cause, global cause, and also what is your responsibility as a citizen. So if you wanted to take this admission, all the details are there in the common prospectus. You can navigate in ignou.ac.in, and also the admission is available in IGNOU Samarth portal. With these words, I, along with my colleague Dr. Diksha Dave and Dr. Venkatramanan, I once again thank you for joining this program. And for any queries, you can anytime mail us or call us in the number given in common prospectus or IGNOU website, school website. Thank you.